Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Muhammad Shehzad Ali. Welcome to my YouTube channel, A Dedicated Civilian. I would first like to remind the viewers, we recently had quite a number of casualties in the Pakistan Armed Forces whom were fighting in Balochistan and in the Afghan-Pakistan borders. Allah Pak have mercy on their souls. Allah Pak give them a highest place in Jannah, inshallah ta'ala. My condolences to their families, and Allah Pak give them sabr. Their sacrifice has always been to ensure for Pakistan to prosper in freedom and to proudly continue with its identity. Our soldiers, they give their lives for faith and duty. And inshallah ta'ala, may the sacrifice never be in vain. Inshallah ta'ala. With that, there is many alarming concerns to ponder upon. How is it that a small group of terrorists, backgrounders, mercenaries, tribal people, drug addicts, how are they able to continue to ambush and infiltrate a state army of 700,000 active men? A state that is well equipped, trained, battle hardened. Through the 2 decades, the Pakistan establishment has always been vocal to the global institutions, to the states, that India is the main culprit who supplies funds and weapons. And in Delhi, these accusations are not always denied. They react to it with a very blunt arrogance. We know within Pakistan there is always has been a traitor element. Traitor elements in the institutions, traitor elements in the local areas, traitor elements due to different sects of religions, beliefs, ideologies. Poverty, it puts a price on the soul. Pakistan also should study on, could it be that live GPS signals, satellite images, these sort of information India could also be providing the terrorists through the satellite images, precise location, number of personnel. It gives an idea to the ground forces. And then these terrorists, they plan, they execute precisely, and then they are able to inflict heavy casualties. Pakistan needs to look into these vulnerabilities very thoroughly, and inshallah ta'ala, if we do so, in the future we could be saving many lives. Again, Allah Pak have mercy on the souls whom have departed. They are in our du'as. As for the viewers, we should always remember them. उनको अपनी दुआ में हर टाइम याद रखें. सदका ज़कात दिया करें. Allah Pak इस मुल्क को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, इंशाअल्लाह ताला. अच्छा guys, since the BJP takeover, I as a Muslim, I am quite well concerned for the community that resides in India,
with Modi and the BJP in power, especially in the recent years, we have witnessed the federal government with a very biased attitude towards the Muslims. The police has behaved very harshly, violently even, and they have neglected their duties to protect its citizens. With BJP, we've seen RSS grow to a very large force. RSS, who were involved in the assassination of their leader, Gandhi. RSS, which started as a children play group, people with sticks and brown chuddies. Now they are a force that goes around threatening a very large population of India. They intimidate, they threat, they're involved in violent activities, and they seem to have the full support of BJP. But as a Muslim, where my concern is very deeply, are the Pandit rallies, the Hindu Pandit rallies. In those rallies, you can clearly hear that they share a great hatred for the Muslims. They feel threatened by those Muslims. They use the history of the Muslim empire against the Muslims today in India. They sense that it is justifiable for them to make the Muslim community submit to their religion. If not, then it is permissible in their Hindu texts to fight. And in the fight, even if they have to commit genocide, it is permissible. I won't go into detail. Perhaps you guys can research yourself, listen to these rallies, listen to their words. But it is a very violent movement. It is a very violent movement. Where will this movement lead in the next few years? Time will reveal. As a Muslim, I'm very concerned. In Islam, we are a one community of brotherhood. The Muslim leaders should engage with India. So we have discussed the vulnerabilities Pakistan is facing, how they can improve, and how to engage. And we also discussed what is going on within India, of a very violent movement taking shape. Last, but very importantly, I wish to highlight a chap of the Indian Armed Forces, rank major, retired. He is now a very popular anchor. He speaks of Pakistan's developments, its internal affairs, to some truth which he does speak, but he adds a lot of rubbish and nonsense. But to speak of state affairs, to some degree, it's fine. To some degree, it's fine. But when you start making jest by bringing in religion or using appalling words, I think from a perspective of a professional army, that is appalling. It's cheap. He uses words as Ummah ka chumma, or the fact that he would always bring up the Messiah, that Pakistan is waiting for a Messiah. Pakistan mein Messiah aayega, Moza karega, Pakistan ko theek kar dega. Jo pehle leader aaye, wo bhi sab Messiah ki nazar se dekhenge. To correct him, बिल्कुल जी मसाया का इंतज़ार है, ये हमारा एक मज़हब का एक अकीदा है। और मसाया तो एक ऐसा फिगर है दुनिया में जो यहूदी भी जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है ना, क्रिश्चियंस भी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बच्चे का शे तुम्हें नहीं पता था, अब पता है, मसाया ज़रूर आएगा और दुनिया को सीधा कर देगा, इंसाफ लेके आएगा। बेगम हो जाओ, इंडिया को भी वो सीधा कर लेगा। हाँ, उससे पहले, क्योंकि तुम लोग
इंडिया में तो इस वक्त शरारतें कर रहे हो, अपने नेबरिंग कंट्री में हर रोज़ हमले करवाते हो, पैसा लगाते हो, वेपन सप्लाई करवा रहे हो, हमारे फौजियों को शहीद कर रहे हो, और तुम लोगों में तो वो डर खौफ भी नहीं रहा, कह भी देते हो जी हाँ हम हैं, हम ही करवा रहे हैं, क्या कर लोगे। जाहिर बात है गाय का मूत पी पी के तुम लोगों के सिर फिर चुके हैं। किसी मोड़ पे तो हमें लग रहा है हमारी जो लीडरशिप है वो एक दिन डिसाइड कर लेगी दैट वॉर इज नाउ द ओनली ऑप्शन। ठीक है, हम तो चलो मसाए का इंतजार कर रहे हैं किसी नेक काम के लिए, लेकिन लगता है जिस तुम लोग बिहेव करते हो ना, जिस तुम लोग बार बार शरारत कर रहे हो और जंग की तरफ लेके जाना चाहते हो दोनों मुल्कों को, लगता है तुम लोगों को तो आपका वो जो हनुमान है, जो बांदर है, शायद उसने आप लोगों को गारंटी दी हुई है जी मैं आप लोगों के आसमान को मैं प्रोटेक्ट करूंगा पाकिस्तान की एयरफोर्स से, पाकिस्तान की मिसाइल से। क्या हाथियों ने आप लोगों को वही भेजी हुई है जी हम इंडियन की आर्मी के साथ हम जाके लड़ेंगे, हम मार्च फॉरवर्ड करेंगे पंजाब के अंदर। क्या चूहे जिनकी आपने मंदिर बनाए हुए हैं, जिनकी आप लोग इबादत भी करते हो, आपकी इतनी कम्युनिटीज़ हैं जो चूहों की भी इबादत करती हैं, शायद वो भी अपने बिल से निकलेंगी आप लोगों के साथ मिल के लड़ने के लिए। तो बच्चे बात वही आ जाती है ना, तुम लोग सूट नहीं करते किसी के मज़हब के बारे में बात करते हुए, पहले अपने मज़हब को देख लो। ठीक है ना, चलो हम लोग ये भी मान लेते शायद पाकिस्तान भी तबाह होगा, लेकिन ये गारंटी है तुम लोगों को जरूर तबाह करके जाएंगे। काश तुम लोग बाज नहीं आ रहे, और ये लग रहा है, और ये हमें लग रहा है जंग की तरफ तुम लोग हमें लेके जा रहे हो। ठीक है ना, और देख लो कोई अजीब सी बात है, हर चीज तैयार पड़ी हुई है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स तैयार हैं, एयरफोर्स तैयार है, मिसाइल टेक्नोलॉजी ऑफ द लेटेस्ट अपग्रेड हमने रखी हुई है, लोग भी जज्बाती हुए हुए पाकिस्तान के अंदर। तुम लोग भी बगैर झिझक अपने गुनाहों को मानते हो, हाँ जी हम करवा रहे हैं। काफी स्ट्रॉन्ग गाय का मूत है, काफी तुम लोगों को उसने दिलेर बनाया हुआ है, जो तुम लोग बिल्कुल ही समझ रहे हो यार जंग होगी तो हमें कुछ भी नहीं होगा। तो होगा, बेगम हो जो, टाइम जब आएगा होगा। समझदार लीडर्स तो इस तरह की हरकतें नहीं करते, लेकिन मोदी जैसे लोगों से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आरएसएस से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके हिंदू पंडित से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शायद वो दौर चले गए हैं जब वाजपेयी जैसे लोग थे, देसाई जैसे लोग थे, आपकी जो एक सीनियर एक जो थी लीडरशिप जो पहले थी, उन लोगों में थोड़ी बहुत तो समझदारियां थी, तो रियलिटी बेसिस पे वो लोग चलते थे। काश वही लीडर्स अब आ जाएं और जिस तरह की एडवांस वेपन्स मुल्कों ने बनाई हुई हैं, शायद वो कभी भी इस तरह की हरकतें ना करें जो आप लोग कर रहे हो। तो लेकिन आप लोगों के साथ बांदर हनुमान होगा जो आप लोगों की मदद करेगा।